Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay, we will start in a minute's time. Okay, there is still 1 minute Good afternoon. left. Good afternoon. Okay, we will continue with the 2019 paper today. Okay, इसके बाद what should we revise? Because we would have done 2 papers together. You want me to do one more paper? $2020 का भी एक पेपर कर लें, उसके बाद we will do chapter wise revision. ठीक है? Yes, sir. Okay, तो एक 2020 का भी पेपर I will put together. Okay, तो we will do one paper from that, and उसके बाद we will do one round of full book revision. Okay, with the mix of simple and tricky questions. Okay, let's do one class per chapter. Okay, so that will give us one quick revision in about slightly over a month. ठीक है, लेकिन अभी एक पेपर और कर लेते हैं, इसके बाद 2020 का भी कर Sir, लेते हैं. after that, can you revise the magnetic effects of electric current chapter? Sir, उसमें जो numerical chapter था that. ठीक है, तो अभी हम कल तो क्लासेस नहीं है ना, तो सैटरडे को तो हम लाइट वाला चैप्टर पूरा कर लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वीक Okay, sir. लेट्स रिवाइज द मैग्नेटिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल पार्ट में, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल्स. Yes. ठीक है, आई विल नॉट रिवाइज द कंटेंट, or you want to revise the basic content also? No, sir, only numerical part. Okay, reasoning also, right? Yeah. Reasoning and numericals we will do. Okay. पढ़ रहे हैं सर जी, बालक तो है ही। क्या हो गया? ओके, सर जी स्कूल कब खुलेंगे? बेटा ये सब ना मैनेजमेंट ही आपको बताएगा, मुझे नहीं पता होता है ये, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है ना. वी हैव टू टेक केयर ऑफ स्टूडेंट्स, वी हैव टू टेक केयर ऑफ रेगुलेशंस, तो वो सब ना मैनेजमेंट डिसाइड करता है. ठीक है, वो आपको रेगुलरली अपडेटेड रखते हैं ना, जब भी कोई न्यू प्रोसेस आता है आपको बताते रहते हैं. सो यू डोंट हैव. सर जी 1 जनवरी बोलो शेखर. 1 जनवरी सु नो आई डोंट नो, स्कूल विल टेल यू बेटा. देखिए मेरे को जो नहीं पता वो मैं नहीं बता पाऊंगा ना आपको. ठीक है, ओके सर. हाँ ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्वेश्चन किया था मीन मार्क्स का. ठीक है, जिसको हमने एज्यूम्ड मीन मेथड से किया था. राइट, pretty easy question, just you have to be careful about your calculations. Now, for what value of k is the polynomial, the given polynomial completely divisible by 3x square minus 5? How can we do this question? सर हम इसमें x की वैल्यू आ जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0 करके, तो x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 5/3 और उससे डिवाइड कर देंगे. उससे डिवाइड मतलब कर, सर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे. उसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. राइट, और उससे Yes, sir. we can get the value of k. Right, so let's do that. So this means ये 3x square minus 5 is what actually? Let's first write that. It is root 3x minus root 5 into Yes. root Root 3x 3x minus 5.
प्लस +5। ठीक है। तो अब हमको ये पता करना है कि ये कब फुली डिविजिबल होगा, राइट? Okay, so both of these need to be factors. Yes, sir. Right? So x is equal to root 5 by root 3. And x is equal to minus √5 by √3. Plus minus. Right? So we can go ahead and put that. So let's do that. Students, switch on your cameras. Switch on camera. Disha, Arun, Devyanshu, Shekhar. Right? Yash Sharma, Arshita, Disha, Arun Kaushik. Sandhya, switch on your camera. Shekhar, Vansh. So 10 by 9. ऐसे कर लेंगे? Yes, sir. So is it the correct answer? आपने मेथड ठीक लगाया है, लेकिन कुछ क्या ये आंसर करेक्ट है, ये बताइए। सर आई थिंक नॉट बिकॉज ये फ्रैक्शन है। नहीं, फ्रैक्शन तो हो सकता है, मतलब टेक्निकली हो सकता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होने में कोई गलती तो नहीं है, सर फिर उससे लेकिन कोई भी आप ये जानते पॉलिनोमियल हैं में कि ये मल्टीप्लाई गलत होगा ना। होगा। हाँ हाँ, देखिए इसमें ना एक प्रॉब्लम है, इस मेथड में ना एक प्रॉब्लम है। आपने क्या गलती किया है? मेथड क्या होता है जब हम ये मेथड यूज करते हैं? x माइनस ए फॉर्म का फैक्टर होता है। इस फॉर्म के फैक्टर पे यूज होता है ये मेथड। Isn't it? यस। तो ये मेथड यूज होता है जब इस फॉर्म का फैक्टर होता है, लेकिन हमारा फैक्टर किस फॉर्म का है? हमारा फैक्टर तो इस फॉर्म का है। तो सर हम इसे सिंपली डिवाइड करके भी k की वैल्यू निकाल सकते हैं। बिल्कुल। तो एक तरीका तो है कि आप इसको सिंपली, अगर आपका फैक्टर इस फॉर्म का नहीं है तो आप इसको लॉन्ग डिवीजन से कर लीजिए।
ये आपके पास एक ऑप्शन है। दूसरा क्या है, अगर मैं आपको कहूं कि नहीं आपको करना तो इसी मेथड से है, तो फिर क्या करेंगे आप? Sir, there is request for you, sir. Yeah. Neeraj sir, sir, Yeah, yes. remove this Sheikh Asana. Okay. I said, yes, he's not taking interest. He's sitting with his friends. See the village side. Okay. Just remove it. मयंक आपका कैमरा ऑन नहीं है। अभिषेक, नागर, अमन, बेटा कैमरा ऑन करिए। सर ऑन है सर हमारा कैमरा तो। ओके ओके ठीक है, अब ऑन हुआ है बेटा, अभी तक नहीं था। ठीक है। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन जो पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये टेम्पटेशन होती है कि हम इसी मेथड से क्यों ना करें। अगर कंफ्यूजन हो तो पूरा डिवीजन कर लीजिए, वरना आपको पास एक तरीका है। देखिए मैं आपको वो बता देता हूं जो आप कर सकते हैं। ठीक है। और सर आप ये तो ये गलत आंसर है, पहले ये बता देता हूं। हाँ बोलो। सर कुछ नहीं। हाँ ठीक है। तो अब ना आप ये देखिए, आप इसको ऐसा लिखेंगे ना, 3x² - 5। ठीक है। अब आप दो ऊपर नीचे 3 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। तो ये हो गया, ये सॉरी, और ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 1/3 हो गया, ये 2/3। अब इसके फैक्टर क्या बने? इसके फैक्टर्स वही बने। सर इसमें k की वैल्यू -10 है क्या? हाँ, k की वैल्यू -10 आएगी जब आप करेंगे। सर वो तो ऊपर भी 10 ही आ रही है, आपने ऊपर मिस्टेक कर रखी है। कहाँ पे? सर आपने ये 3×25/9 इसमें सिर्फ 3×25/9 बचा है और +5/3 इस पूरी इक्वेशन में प्लस के। तो सर 3 से अच्छा 9 को काटा तो 3 टाइम्स, और 25/3 अच्छा, + -10 5/3 माइनस, 30/3 विद अच्छा 10। ओके, -10 आ गई। ओके सर वेरी ऐसे करेक्ट आएगा। ओके। तो कभी भी ना हम जब ये मेथड यूज करते हैं, बट लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू, राइट? When we use the method, it should be in the form x minus a, right? So it's better to get it in the form x minus a, and then substitute this value equal to 0. Then you will never make a mistake. Okay? यस सर। Okay. Shiv Garg. Yes, Shiv ma'am. Garg. What are you Find doing, the beta? zeros of the quadratic better pay attention, है ना? मैथमेटिक्स है, ध्यान से नहीं करेंगे, केवल सुनेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। यू हैव टू डू इट विद मी। फाइंड द zeros of the quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and coefficients. Right now this is a straightforward question, right? आपको उसके zeros निकालने यस और सर। उनके जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना, राइट? यस सर हो तो जाएगा। हाँ, तो हम पॉलिनोमियल को इस तरह लिख लेते हैं। So this will become what? This is -42 आना चाहिए।
42 कब आ जाएगा? 14 and 3 से, राइट? तो 14 और 3 पे आ जाएगा। You can take 7y 3y minus 2. So 3 minus 2. Okay. So what are the zeros? -1/7 और 2/3। Okay. Now what do we have to verify? He is saying now verify the relationship between coefficients and the zeros. So sum of zeros देखते हैं। Sum of zeros क्या है? -b/a. बेटा शिव ये शिव म्यूजिक गर्ग कौन चला रहा है? सर शिव सर है, शिव 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 गर्ग। हाँ तो म्यूजिक नहीं चलाइए शिव, क्या अपने को म्यूट पे रखिए। चला शिव अलग सर दिख शिव रहा चला है रहा नाम है। नाम बदल देना तो सर शिव चला रहा, शिव। शिव अगर दोबारा होगा आई विल हैव टू रिमूव यू। ओके सही कह रहा हूँ सर, अमन बिल्कुल सही कह रहा है। सर आप क्वाइट रोज ही इसको रिमूव करते हो, ये रोज ही बजाता है पूरी क्लास में गाने। सर रिव्यू कर सर दो इसको इसको। सर रोज नहीं, बजा रहा है शिव। हाँ कोई बात नहीं, जब करेगा दोबारा उसको रिमूव करेंगे, ठीक है? ओके सर। Focus on what we are doing, right? ओके सर So sum of zeros sir. is this, okay, which is same as minus b upon a. यस सर। ठीक है, उसी तरह से product. Let's do the product now. What is the product of zeros? Is minus 2 upon 20, which is same as, now let's find c upon a. -2 अपॉन, So which is same, right? So we have established that alpha plus beta is equal to minus b upon a, and alpha beta is equal to c upon. C अपॉन। Okay. Write all the values of p for which the quadratic expression has equal roots. Find the roots of the equation so obtained. Okay. तो equal roots के लिए हम d को यूज करेंगे, discriminant को. What is the discriminant? B square minus +-8। AC. सर रिमूव द शिव। सर जी हटा दो शिव तुम। सर गार्ड बजा रहा, सर निकाल दो इसको। क्वाइट सर निकाल दो एवरीवन। इसको। Okay, so what is b square? So p square minus Minus 4 into 1 4 to 16. Okay, so p is equal to +-8 आ जाएगा तो। plus minus 8.
right? Now, so we have to now find the roots of the equation. Okay, so हमारी equation क्या बन गई? x square plus minus 8x plus 16 is equal to 0. What is this? It is x plus minus 4 whole square is equal to 0, which means x is equal to minus plus 4, which is same as plus minus 4. It's okay. So roots are roots are roots roots are minus 4 and 4. and plus 4. Okay. If a line is drawn parallel to, so इस क्वेश्चन में जो थोड़ा किसी से गलती क्या हो सकती है, आसान क्वेश्चन है, केवल ये स्टेप है जहां स्टूडेंट से कभी कभी गलती हो जाती है. ओके, दिस स्टेप कि दे डू नॉट राइट द प्लस माइनस. अगर खाली +8 ले लेते हैं तो क्या होता है, उनका केवल -4 ही रूट आता है एंड दे गेट हाफ द मार्क्स. ठीक है, तो प्लस माइनस का थोड़ा सा हमें केयरफुली देखना पड़ता है. इन अ लाइन, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides and distinct point, then prove that the other two sides are divided in the sheet. ये क्वेश्चन हमने अभी अभी किया ही था, राइट? Yes sir, B theorem भी है. हाँ, सो ये मतलब कॉमन क्वेश्चन था, रिपीट हुआ है तो हमने अभी अभी किया ही था. Okay, let's do this question. Amit standing on a horizontal plane finds a bird flying at a distance of 200 meters from him at an elevation of 30 degrees. Deepak standing on the roof of a 50-meter high building finds the angle of elevation of the same bird to be 45 degrees. Amit and Deepak are on opposite sides of the bird. Find the distance. ठीक है, तो let's do that. Amit को A लेते हैं, तो A, Amit is looking at a bird. Let bird be B. And the bird is how far away from him? 200. 200 meter. Right? And angle of elevation is 30 degrees. 30 degree. अब जो who is the Deepak, right? Now Deepak is not on the ground. He is at a height of 50 meters. 50 meter. 30 degree. ठीक है, तो यहाँ पे दीपक है और दीपक को ये बर्ड जो है दिखाई देती है कितने पे? 45 डिग्री. ठीक है, ये दोनों ऑपोजिट साइड पे हो गए बर्ड. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम दीपक, हमें ये निकालना, राइट? तो सबसे पहला पार्ट तो है ये डायग्राम बना पाना वर्ड्स को फॉलो करके, राइट? नाउ लेट्स, after that it should be a easy problem to solve. So how will we proceed with doing this? हमको सबसे पहले क्या निकालने की जरूरत है? हमें सबसे पहले ये ट्रायंगल में से आंसर निकालना है. या तो हम हॉरिजॉन्टल निकाल लें या वर्टिकल निकाल लें. वर्टिकल निकालना बेटर है, क्यों? क्योंकि ये कॉमन है दोनों प्रॉब्लम्स में, राइट? तो इस वर्टिकल कैसे निकालेंगे? ये हाइट हमें पता है 50 है, तो ये अगर हम इसको सी बोल देते हैं, अगर हम सी भी निकाल लें तो हम ई बी भी निकाल सकते हैं, राइट? तो व्हाट इज सी बी? ओके, So CB upon बाय AB. 200
okay, is sine 30 degree. 31/2. So CB is equal to, That is 100. तो CB 100 आ गया, तो EB is equal to So 100 minus 60. 60, 50, 50. 50. So 50 आ गया. तो अब हमें पता है ये 50 है, ओके, तो we know this is also 50, right? It's a right angle triangle, and this is 50 root 2. Okay, so the Yes, distance is 50 root 2 meter. Okay, it's a good idea to also give approximate number, right? Approximately this will be what? 50 into 23.14, right? Which will be सर ये तो आपने पाई की वैल्यू रख दी ना 3.14 तो. oh Yes, sorry sir. sorry, I'm so sorry. 50 into 1.414, okay, which is now going to be 7 708, right? 70.8, right? Meter. Okay, which is equal to 70.8 meter. Okay, that was a mistake, but it's a good idea to write this, although this is also a complete answer. Okay. Yes. Okay, why am I saying it's a good idea to write this? Because it's a real life problem. और रियल लाइफ में किसी भी मीटर टेप वगैरह में √2 तो लिखा नहीं होता है, राइट? लेकिन अगर ये ज्योमेट्री के प्रॉब्लम होते हैं ना प्योर, जैसे ऐसे कोई है, ये लेंथ निकाली है, इट्स अ ज्योमेट्री प्रॉब्लम, देन नेवर डू दिस, देन यू शुड नेवर डू दिस. ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स में इट्स गुड इनफ टू लीव द इरेशनल नंबर. ओके, a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and a base diameter of 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. सर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. NCERT का है, with exact same numbers. Yes, सर आई sir. थिंक सो. Okay. Find the mass of the pole given that density is given. Okay. So let's first draw this a little bit carefully, right? So there is a We cylinder. have to find the volume of both cylinders. ठीक है, दो सिलेंडर हैं, ये तो क्लियर हो गया हमें कि दो सिलेंडर्स हैं. Now let's write their dimensions. Height is 220. The base diameter is 24, so the radius is 12. Another cylinder of height 60. But यहाँ पे radius दिया है 8. ओके, तो ये थोड़ा सा वर्डिंग्स में इन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश की है. एक डायमीटर दिया है, एक रेडियस दिया है, ठीक है, बट उसके बाद तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राइट? सो वॉल्यूम निकालते हैं. वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, राइट?
ये होता है, राइट. सो लेट्स पुट द वैल्यूज. पाई को बाहर ले लेते, 3.14 ही लिख लेते हैं ब्रैकेट में. R1 स्क्वायर, ओके. सो 12 स्क्वायर 144 into 220 plus 8 square 64 plus 60. What all can we take? What all can we take out? NCERT का Sorry, डिजिट्स भी सेम. वो भी सर ये same. NCERT. यस सर, डिजिट भी सेम है. Okay, okay, okay. Very good. Okay, so मतलब you can see कि as it is question आ जाते हैं कई बार बोर्ड में, right? So let us just take some common numbers out to make life easier. So I'm taking a ये zeros out ले लिए. We can take this is 4. I can take out 8, 16, 32. इतना तो ले ही सकते हैं, right? तो ये क्या हो गया, 11 into इसमें से 16 into 9, राइट. तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन. 31.4 into 32 और अंदर हो गया 99 plus 12. ओके, तो ये तो अब करना पड़ेगा. ओके, लेट्स do whatever this is, but before we, so this is the volume in centimeter cube. Now we have to find the mass. So mass is density into volume. Density is given to be 8 gram, right? So 8 gram per centimeter cube unit same है into 8. So इस चीज में 8 और multiply करना. Okay, which is, so हमारा multiplication किन terms का है, 31.4, 128 and 111. Okay, so first let's perform this multiplication, okay, and then with 111 we will do in the end, right? So I'm not going to spend time on doing it. Let me just, because it takes me time now to do these calculations usually. So okay. Yash Sharma, switch on your camera. Yash Sharma. Okay, 32 Vansh into Aman. 8 क्या होता है? No, ये 256 होना चाहिए. So 532.8. हाँ, so the answer is coming out to be So 111,532.8 centimeter cube. 892.26 2.26 kilogram. kilogram. Okay, so Kilogram. this is the final answer. Okay, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा समय लगेगा इसमें. Otherwise the question is easy. Okay,
Now this is a construction question. I'll skip that. Anyway, we are coming close to the end of the class. This is also a construction questions. Okay, construction question in the class I am skipping, but आपको घर पे जरूर practice करना है, right? Okay, sir. Okay, so again, it's a less than type. We have done a similar question very recently. What do we have to first check? That it is ascending order. It is ascending order. Okay. The second thing we have to check is that it is continuous. It is continuous. So we can just find the cumulative frequency distribution. 20, 30, 36, 40, 50. Okay. And then ogive is out of syllabus, so I don't want to discuss that. Otherwise, just plotting these numbers is called ogive, so it's not really a big. Now let's do this. Couple of more questions left. Let's try to finish that. Okay. Prove that. सर इसमें tan थीटा और cot थीटा को sin और cos की टर्म्स में चेंज कर लेंगे पहले. वो भी कर सकते हैं. Right? So let's try to do that. Right? Okay. Now, so we can make it sine theta minus cos theta, and sine theta goes up and cos theta comes down. Yes, sir. Sin square theta upon cos theta into sin theta minus cos theta. Let's make it a Plus minus here so that नीचे हमें एक जैसा आ जाएगा sin theta minus cos theta, and we will get a sin theta here and cos square, right? Now we can further simplify. We'll get sin theta cos theta sin theta minus cos theta, and here we will get sin cube theta minus cos cube theta, right? yes, sir. Which we can write as sin theta minus cos theta. Cos theta bracket sin square theta plus cos square theta plus sin theta cos theta. Same denominator. Okay, this can be replaced by 1, right? और सर sin थीटा माइनस cos थीटा से sin थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा. तो ये sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा cos थीटा, so ये हमारा चला गया, right? So अब हमारा क्या बच गया? हमारा बच गया 1 प्लस sin थीटा cos थीटा. sin थीटा cos थीटा अलग अलग लिख लेते हैं.
तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 रह जाएगा और ये रहे। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये वाला 1 आ गया प्लस दिस बिकम कोसेक थीटा and this becomes Yes, sec sir. theta. Sec theta. Okay, this is what we were aiming to get, right? This is what we were aiming to get. So it's equal to right hand side. Okay. So no tricks really in this question, just a slightly long calculation. Okay. Let's do Yes, sir. So let's do a similar question. How will we do this? सर इसमें भी cot थीटा और cosec थीटा को sin थीटा और cos थीटा की में चेंज कर लेंगे। Okay, so let's see what else can be done. I think can we do something else? क्योंकि अगर आप वो करोगे ना, वी नीड टू गेट इट इन दिस फॉर्म, वापस उस फॉर्म में कैसे लाओगे? तो सर हमें इसमें LH निकालना पड़ेगा पहले, जो वैल्यू आएगी फिर RHS को भी रिड्यूस करके उसी फॉर्म में लाना पड़ेगा। हाँ, आप वो जरूरी नहीं होता कि उस तरह करो, आप क्या कर सकते हो ना, आप ये लिख सकते हो RHS इज इक्वल टू दिस, सर LHS आ गया हमारा 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब आप क्या करो ना, आप इसमें ये वाला जो टर्म है इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, राइट? माइनस साइन थीटा बाय कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा by cot theta minus cosec theta. Okay, in the bracket you can adding and subtracting sin theta by cot theta minus cosec theta. ठीक है, ओके, तो हम ये कर सकते हैं. Now what we are hoping to do is we should get by from this we should get a 2, right? सर अगर हम रिड्यूस करके दोनों LHS और RHS को अलग अलग करके करें तो वो भी तो सही होगा ना? देखिए वो करा जा सकता है. Usually I don't know what the board now has a rule as, right? But usually जो concept होता है जब हम बोलते हैं prove that का मतलब होता है कि LHS से शुरू करके RHS तक आओ. अगर क्वेश्चन लिखा है वेरीफाई या इवन शो, तब you can say RHS LHS is equal to something, RHS is equal to something, and eventually you can say LHS is equal to RHS. ठीक है, लेकिन जब prove is a very mathematical term. सर आपने यहाँ पे ये साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा ये दोबारा से प्लस क्यों किया है? नहीं, क्योंकि अगर ऐड करूंगा तो सब्ट्रैक्ट भी करूंगा ना, तभी तो एक ही चीज को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो LHS won't change, right? यस सर। तो मैंने LHS में ये वाला जो टर्म है ये ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों कर दिया.
अब मुझे पता है कि मैं क्या करने वाला हूं आगे चल के, इस वाली चीज को क्या प्रूव करूंगा कि ये 2 है, राइट? वो मेरे लिए इजी है करना। उसमें अब आप, ताकि ये बार बार ना लिखना पड़े, अगर आप चाहो तो ये कह सकते हो कंसिडर दिस, यू कैन ऑल्सो से कंसिडर दिस, और यू कैन कीप राइटिंग इट अगेन एंड अगेन, इट्स ओके, बोथ वेज इट्स ओके। सो ये क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ओके। और साइन थीटा तो बाहर है, ऊपर क्या आएगा, कॉट थीटा माइनस दिस माइनस, सो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा, नीचे आ गया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या आ गया, ये साइन थीटा बाहर है, कॉट माइनस, और ये So cot theta minus cosec theta. माइनस 2 कोसेक थीटा, राइट? ये आ गया, ये टर्म तो एज इट इज आई, राइट? तो माइनस को लिखने से अच्छा मैं ऐसे लिख लेता हूं, okay. Now what is cosec square theta minus cot square theta? 1. 1, okay. So this is 1 and this is cancelling out, so we will be left with 2, so it will become 2 plus sine theta. See, this is easiest ways to do it like this. Why? Because you get an idea, right? कि आपको ये टर्म की फॉर्म में लाना है, इस टर्म को यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो आप, फिर आपको ये केवल 2 में लाना है, which is easy manipulation. Yes sir, आ गया समझ। ठीक है ना? तो we are done. There is 1 or 2 more questions, but that's okay. But hold on, I have to mark the attendance also. Okay. So what are the questions left? Let's quickly review the questions that are left and then we can close the session. Which term? सर हमारे क्लास का टाइम खत्म हो गया। हाँ, time. So okay, we will close the session. Not an issue. There are 2 or 3 questions left. I'll consider them in the next class. ठीक है? ओके सर। Okay. Okay. Thank you. Bye bye. अच्छा जी, राम राम। Thank you sir. Thank you. Bye bye.